Okay, 10th standard. Now, our next topic is how federalism is practiced. In this, we are going to read three topics. First is linguistic states, second is language policy, and third one is center state relation. So, all the three the points of federalism practice is important. This comes for 3 marks. So, you should know how to write the answers. You should write every time, you should write the answers in flow charts, in points, and underline the पॉइंट्स विच आर देयर इन दैट पॉइंट. ओके, इंपॉर्टेंट लाइन्स होते हैं ना, अंडरलाइन करते हैं ताकि फोकस रहे कि ओके ये इसका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है. तो ट्राई टू राइट योर आंसर इन सच अ मैनर. सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में द पॉइंट्स विच यू हैव टू कवर वॉज दिस. आई हैव टेकन अ टेस्ट ऑन 17th July ऑल्सो, and I think very few are there who have written the correct answer. The rest have written the paragraph answer which I think I have deducted marks also. So you have to write in point wise. The first important point which you have to write is, in 1947 the boundaries of several old states of India were changed to create new states. Now जब हम आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज़ को क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था ताकि वो न्यू स्टेट बना सके. वो न्यू स्टेट जिसमें सेम लैंग्वेज के लोग रह सके. और ऐसा नहीं है कि हमने इंडिया में सारे सेम लैंग्वेज वाले ही सेम लैंग्वेज पे ही ध्यान दिया है कि हमने सारे स्टेट में यही एक कॉन्सेप्ट रखा क्या चाहिए सेम लैंग्वेज इनको एक स्टेट बना दे. नो, वी हैव put stress on the culture also. We have seen their geographical conditions also. On these basis they are categorized into different states. For example, if you see JNK, you can see their mountains which are snow capped, and the areas which are there in the northern part, that is the पंजाब, बिहार, यूपी, ये क्या आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स है. यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड्स मिलेंगी, प्लेन लैंड्स मिलेगी. अगर आप वही साउथ में चले जाए तो आपको क्या मिलेगा, डेक्कन को प्लेट्यूज़ मिलेंगी. तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए. इट्स की वी हैव सीन द अदर थिंग्स ऑल्सो एंड वी हैव कैटेगराइज और वी हैव मेड डिफरेंट स्टेट्स. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, old states of India were changed into new. Second, same language lived in same state. Third, they were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity or the geography. Third point. And the fourth point, the formation of the state on the basis of language were raised. Some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. They thought, because it was that initial time, it was not now, it was that time when we were doing something new. So they thought कि if we are going to make if we are merge the different states on these basis, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव पुट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, है ना. तो द रिज़ल्ट विच वॉज देयर कि द एक्चुअली by categorizing the country into different states that make the country more united. So they also found that yes, doing administration in different countries also becomes easier for them. Like we have different chief ministers for different states. तो द चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स की भैया उनके स्टेट में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा. सो दे थॉट दैट इट हैज़ बेनिफिटेड द कंट्री बाय मेकिंग इट मोर यूनाइटेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो is going very smooth. So 5 topics I have covered in linguistic states. So please try to make your own answers. If that is not there in the notes, then show it to me कि this is correct or not. Please do not write in paragraphs again. And tomorrow we will be covering 2 topics, that is language policy and center state relation. Thank you class.